Hi, welcome on Yourpedia, and today I'm going to discuss with you a topic which is stress strain diagram. Now, this stress strain diagram topic is covered by three different mentors, including me. पहले इसको cover किया जगजीत सर ने, then सकलानी सर ने, and now I'm covering it. Reason why three different mentors are covering, I believe there are two reasons for that. Number one, ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हैं या मटेरियल साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिटन एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल एज इंटरव्यू परस्पेक्टिव. सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वैसे भी इंटरव्यू के लिए इज अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी तुम बोल सकते हो कि सर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो ही इज सडनली गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर. सेकंड इज मटेरियल साइंस के अंदर भी दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और बाद में इफ यू गो फॉर मास्टर्स there is a dedicated subject or domain material science department on various IITs and ISCs. There this is much required domain और आपके written exam and interview में ही आता है. And engineering services paper 1 में, in my opinion, this topic certainly he is going to ask you question from this particular topic. Second reason, other than it is very important topic, second reason is every teacher want to teach this subject. Why? Because it's so interesting actually. So first Jagjeet sir took it, then Saklani sir took it, and then even I am feeling motivated to take it. So but what we decided, all of us decided that we will give different perspectives to this topic. तो सकलानी सर ने इसको thoroughly करवाया, जगजीत सर ने इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 के हिसाब से करवाया, सकलानी सर ने इसको मेरे आई बिलीव गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से भी पूरा करवा दिया. एंड आई एम डूइंग दिस टॉपिक मोर फ्रॉम डायग्राम परस्पेक्टिव कि आपको एक पूरा ब्रीफ इसका मिल जाए व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, एंड इंटरव्यू के हिसाब से मैं पूरी तरह से इसको आपको करवा दूं. सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज जस्ट सी दिस टॉपिक डिटेल में तीनों मेंटर्स का and just revise this topic, and this is very very important topic of material science and strength of material. Now let us start with this stress strain diagram. I believe this Jagjeet sir has already covered what is the meaning of stress, कितने टाइप की स्ट्रेस होती है. एंड स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया. एंड रेजिस्टेंस फोर्स तब होती है जब पहले फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस आता है. दैट रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. And stress is of different types: normal stress, shear stress. Normal is tensile stress, compressive stress. Then there's a stress which is related to external loading, and then there's a thermal stress. ये सारा domain is covered by mentors or it will be covered. Now स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस में तो स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं. और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दो टाइप का होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन एंड आपका नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन और कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन. तो engineering stress strain is something which is actually whether you are taking actual cross section area or whenever you are stretching then cross sectional area is changing. तो क्या तुम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हो या इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हो जो चेंज हो रहा है, या तुम ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर रहे हो या तुम इंस्टेंटेनियस लेंथ से डिवाइड कर रहे हो. सॉरी. So उसके depending upon that you have engineering stress strain and you have engineering you have true stress strain. That is what I'll say. ये डायग्राम जो हम नॉर्मली प्लॉट करते हैं ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का प्लॉट करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज लोड रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया. अभी वो ओरिजिनल एरिया क्या होगा, दिस ए नॉट इज द ओरिजिनल एरिया. And what is the original length? L naught. And what is the instantaneous length? L naught plus delta L. Delta L is the change in length. अब मेरे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को निकालने के दो तरीके हैं. आई कैन से स्ट्रेस इज दिस, नॉट दिस फोर्स, दिस इज द लोड जो मैंने बाहर से लगाया. व्हेन आई अप्लाई द लोड तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस हो जाएगा. दैट रेजिस्टेंस फोर्स एक्चुअली इज इक्वल टू एफ ओनली. सो स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया ए नॉट, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस. लेकिन क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, अभी देखो इसमें डायग्राम में देखो एरिया इज चेंजिंग, एरिया नेकिंग प्रोड्यूस हो रहा है, अगर डक्टाइल मटेरियल है एरिया इज चेंजिंग. तो अगर एरिया चेंज होगा तो मैं ट्रू स्ट्रेस निकालता हूं. एंड व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस? सर ट्रू स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया, जो कम होता जाएगा तुम्हारा. तो देयर आर टू वेज वी कैन प्लॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस. और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोनों के लिए बनता है. इंटरव्यू में पूछेगा कि मेरे को इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं चाहिए, मेरे को ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिए, वो बना के दिखाओ. Now what is engineering strain? Sir, engineering strain is change in length delta L over L naught, original length. So resistance force per unit A naught, engineering stress. Change in length delta L over original length L naught is engineering strain. And normally what we plot is engineering stress strain diagram.
नाउ इफ इट इज नॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, इट इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। उसको कैसे प्लॉट करते हैं सर? द रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस्ड पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया, ए नॉट नहीं, इंस्टेंटेनियस एरिया, दैट विल बी लेसर देन ए नॉट। And what is the true strain? True strain is nothing but the change in length over original or over the instantaneous length. So what is instantaneous length now? Now the length has increased to L naught plus delta L. So instantaneous length is more and instant area is less. So true stress is more than engineering stress and true strain is less than the engineering strain. That is how it all goes. तो मेरे को engineering stress strain diagram बनाओ और मेरे को true stress strain diagram बनाओ. That is what the question in interview is going to ask you. Now let me go back and tell you, ये stress strain diagram में कुछ points होंगे. ये stress strain diagram typically हम low carbon steel या mild steel के लिए इसको plot करते हैं. That I'm going to discuss with you. And this process is necking और इसमें area of cross section कम होता चला जाएगा. It can be brittle fracture, it can be ductile mode of failure, something like that. Ultimate tensile stress point, this is a yield stress point, this is a fracture stress point. So this is all we are going to discuss now. ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया how this stress is induced. तो ये कौन सी स्ट्रेस है? This is the tensile stress. तो स्ट्रेस की क्या क्या कैटेगरीज हैं सर? नॉर्मल स्ट्रेस, shear stress या टेंशियल स्ट्रेस. Normal stress is of two types sir. Normal stress is of tensile stress and it can be compressive stress. ये कौन सा लोड है सर? ये तो पुलिंग है. पुलिंग मतलब टेंसाइल है. टेंसाइल मतलब जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा that will be tensile stress. So this is what we have already covered. This machine you see, this machine is called universal testing machine, UTM. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और यूटीएम. इसमें आप करते क्या हो? यूटीएम के अंदर आप एक लोड यहां पे बॉडी, यहां पे वर्कपीस को माउंट कर देते हो इस तरीके से एंड दिस इज गोइंग टू पुल दिस वर्कपीस, दिस इज गोइंग टू होल्ड इट एंड वर्कपीस को पुल करेंगे. जब वर्कपीस को पुल करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके का नेकिंग प्रोड्यूस होगा एंड दैट नेकिंग एंड लोड, यहां पे आप लोड नोट करते जाओगे. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस्ड. रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस्ड आपको पता लग जाती है और ओरिजिनल आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता होता है ए नॉट. तो दैट एफ ओवर ए नॉट कीप्स ऑन गिविंग यू व्हाट? keeps on giving you engineering stress. And similarly आपको इसका ओरिजिनल लेंथ पता होती है L नॉट you know, एंड जितनी इसकी लेंथ अब बढ़ती चली जाएगी तो डेल्टा एल विल बी नोन एंड अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट इट. तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. एवरी कॉलेज हैज दिस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किस लिए प्लॉट यूज करते हैं सर? वो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए प्लॉट करते हैं. दिस इज द वर्क पीस विच आई वाज टेलिंग यू. देयर इज अ स्पेसिमन एंड देयर इज अ लेंथ जो हम होल्ड करते हैं. सो यू नो देयर आर सम काइंड ऑफ होल्डर. ये आपका होल्डर है, ये भी आपका होल्डर है. ये आपकी यहां पे हमने लेंथ ले ली जिसको हम एल नॉट बोल रहे थे, दैट इज ओरिजिनल लेंथ, लेकिन अब वो चेंज हो जाएगी और इसको हम पुल करते जाएंगे. तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. बट आई एडवाइज यू, अगर कॉलेज में आप हैं तो आप जरूर इसको चेक करो व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस. Now let me teach this entire subject to you through stress strain diagrams only. मैंने कुछ 50 एक डायग्राम इकट्ठा किया है and let's teach through that particular diagrams only. So as I told you, stress is resistance force per unit area. Load per unit area नहीं बोलना है इसको, resistance force per unit area बोलना है, क्योंकि resistance होगा तभी stress induce होगा. Okay. अब ये हमने बॉडी के ऊपर लोड लगाया और बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इंड्यूस हुआ एंड दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड एंड ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई. अब इसमें जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे देन दिस नंबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. इसको ऑफसेट नंबर बोलते हैं. मे आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? सर यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसको और क्या बोलते हैं सर? उसको पास्कल बोलते हैं. तो दैट इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस. व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेन? सर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यूनिट लेस. लेकिन इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो आई कैन कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो इसका यूनिट आपका परसेंटेज होता है. नाउ सपोज I give you the strain is 0.2%. What is the meaning of that? Sir, meaning of that is that change in length over, let us say, original length into 100 is equal to 0.2. That is the meaning of it. 0.2. So basically that 0.2 अगर मेरे को परसेंटेज में नहीं निकालना है, मेरे को एब्सोल्यूट में निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 0.002 इन एब्सोल्यूट टर्म. तो इसी को मैं 0.002 भी बोल सकता हूं. तो कितनी स्ट्रेन है सर? 0.002 और सर 0.2%. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि यहां से हम एक टेंशन लाइन प्लॉट करते हैं और वो टेंशन लाइन जहां पे कट करती है वहां पे जो मेरे को स्ट्रेस मिलती है
उसको बाद में तुम्हें बताऊंगा। हम यील्ड स्ट्रेंथ या प्रूफ स्ट्रेंथ कहते हैं, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट इट। सो एक्चुअली जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। लेट्स गो नाउ नेक्स्ट, see this diagram now. Again, I'm going to show you many diagrams and there is going to be overlapping in all the diagrams, but keep learning what we are doing. So again, now can you tell me what we are going to find from this E? What is the meaning of E? E is the modulus of elasticity. How do you calculate modulus of elasticity? Sir, modulus of elasticity is equal to normal stress over normal strain. एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे निकालते हैं? सर इसको स्लोप की फॉर्म में निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप सर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा कौन सा है? सर ये एंगल थीटा है, तो E इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हम एक और बात जानते हैं, वी नो वन थिंग दैट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, बट एज वी एंटर इनटू द रीजन वेयर द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां से व्हाट यू गेट इज कर्व, यहां तक व्हाट यू गेट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, बट स्लोप ऑफ अ कर्व कीप्स ऑन चेंजिंग। कैन यू सी दिस स्लोप इज चेंजिंग? टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, स्लोप इज चेंजिंग। तो स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट ओनली विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, or if it is very close to elastic limit, then within elastic limit where we get the straight line. Beyond that we do not get straight line and slope is not constant. तो क्या है कि सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो निकालते हैं ना हम, वो ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के निकालते हैं एज स्लोप। दैट इज द रीजन दिस सिग्निफिकेंस व्हाट वी आर गेटिंग। लेकिन क्या हम स्टिफनेस, एक टर्म आएगी जिसको हम स्टिफनेस बोलेंगे, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टिफनेस। क्या हम किसी बॉडी की स्टिफनेस को प्लास्टिक रीजन में भी निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती है, पैरेलल खींचना पड़ता है स्ट्रेट लाइन, और उससे भी हम निकाल सकते हैं। या अगर हमारे पास मटेरियल ऐसा है कि we do not know elastic limit very clearly, then we draw a tangent line parallel to this particular line. तो हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट लाइन को 0.2% स्ट्रेन से ड्रॉ करते हैं, जिसको ऑफसेट मेथड बोलते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड ऑफसेट मेथड। तो somebody ask you what is भाई ऑफसेट मेथड? तो आप बोलेंगे सर ऑफसेट मेथड क्या है? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन विच इज एट 0% स्ट्रेन। ये लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचो एंड इस लाइन को 0.2% स्ट्रेन पे खींचो, जहां पे ये इसको हिट करेगी कर्व को, दैट गिव्स मी द यील्ड स्ट्रेंथ। दैट इज कॉल्ड ऑफसेट मेथड। किसके लिए होता है? डक्टाइल के लिए, ब्रिटल के लिए? ओनली सर ये डक्टाइल के लिए होता है। वाई? बिकॉज ब्रिटल में सर प्लास्टिक रीजन नहीं होता, बाद में डिस्कस करता हूं। प्लास्टिक रीजन इज नॉट देयर एंड very clearly you can see the yield point or fracture point that we can see. Anyhow, this is what is the diagram we have already seen. Now come to this stress strain diagram. पहली बात, ये stress strain diagram हमने किस मटेरियल के लिए प्लॉट किया है? For which material I am plotting this stress strain diagram? Answer is this is mild steel. What is the meaning of mild? You know, Jagjit sir is going to discuss with you the material properties. स्टील क्या है, आयरन क्या है, कितने टाइप का स्टील है, उनका एप्लीकेशन क्या है, दैट एंटायर पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस इज गोइंग टू कवर। लेकिन माइल्ड का मतलब यहां पे होता है मॉडरेट और कम। इन माय ओपिनियन, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर 0.3% कार्बन से कम हो तो वो आपकी माइल्ड स्टील कैटेगरी, वो आपका लो कार्बन स्टील में आता है। सो माइल्ड स्टील आई बिलीव इज लो कार्बन स्टील। बाद में आप डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कार्बन डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कार्बन है आयरन के अंदर, इधर यू गेट स्टील और यू गेट कास्ट आयरन। इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन इज लेस देन 2% और मे बी अप टू मैक्सिमम 1.6%, 1.5%, अगर वहां तक है तो उसको स्टील बोलते हैं। लेकिन इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर देन 2%, इट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। तो somebody ask you what is the difference between cast iron and the steel? Sir, cast iron is the iron containing more than 2% of the carbon, and that is the reason it is brittle material. Steel is something sir in which carbon percentage is less. अच्छा भाई, कार्बन के ऐड करने से क्या होता है? सर ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन जो है वो एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह से उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बैठ जाता है। अब ये क्या
चीज मैंने बोली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट ये होता है आपका, ग्रेन डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, तो ये सारा जगजीत सर डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस के अंदर। लेकिन ये समझ लो कि कार्बन जैसे से आप डालोगे आयरन के अंदर, तो कार्बन उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव भी करता है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टीज हमें अच्छी मिलती भी नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। So steel is that particular iron in which the percentage of carbon is less than 2%, and cast iron may it is more than 2%. Mild steel is that in which percentage of carbon is less than 0.3%. I believe it's a low carbon steel. Low carbon steel, and hence it is called mild steel. Anyhow, now come back to this. आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमेशा माइल्ड स्टील का क्यों प्लॉट करते हो? इफ ही आस्क यू इन द इंटरव्यू व्हाई माइल्ड स्टील, Why you always draw the stress strain diagram, जब भी ड्रॉ करने को बोलेंगे, या अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाओ एंड इफ यू टाइप stress strain diagram on Google, then majority of the times you are going to get this diagram, and this diagram is of the mild steel. Why only this diagram? Why not other diagrams? Let's say for cast iron, let's say for aluminium, for brass, for other steel, high carbon steel. Why not for these materials? Are they not important engineering materials? Answer is yes, they are. लेकिन तुम इनके लिए ओनली माइल्ड स्टील के लिए क्यों नॉर्मली ड्रॉ करते हो? क्योंकि सर इट गिव्स यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट गिव्स यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। भाई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मींस व्हाट? कौन सी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आपको मिलती है? सर ये देखो, मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मेरे को इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, रेजिलियंस, टफनेस, इलास्टिसिटी, सब मेरे को डिटेल में पता चलता है। इफ आई गिव यू डायग्राम ऑफ कास्ट आयरन, you will not get lower yield point, upper yield point, you will not get even ultimate point and fracture point. अगर मैं आपको कॉपर दे दूं, you will not be in position to see these points clearly. तो सर माइल्ड स्टील क्यों ड्रॉ करते हैं? Because we get each and every point clearly we can see, and for our analysis maximum information के लिए we go for this particular diagram. That is the meaning of it. अब देखो यहां से O से A तक लिमिट को बोलते हैं आप, अगर मैं इनके बारे में डिस्कस करूं, what these points are called proportional limit. Why it is called proportional limit? Because stress is proportional to strain, and the constant of proportionality is modulus of elasticity. So how do you get modulus of elasticity? Sir, sigma by epsilon. कैसे कैलकुलेट करना है? Sir, if you give me this angle, then I will take tangent of theta, that will give me modulus of elasticity. So A is the proportionality limit. जब भी word proportional limit आए, think of हुक्स लॉ. इफ ही आस्क यू हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है भाई? इलास्टिक लिमिट तक या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक? आंसर इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक. लेकिन सर देन इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड हुक्स लॉ इज दैट ओनली. तो वो तो इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी की बात नहीं कर रहा. रीजन बीइंग बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल्स इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज द सेम. अगेन लिसन, इन मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल इलास्टिक लिमिट and limit of proportionality is almost overlapping, and hence normally he says that particular thing. अब इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है? सर इलास्टिक का मीनिंग होता है कि अगर मैं अनलोडिंग कर दूं, मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को करते हैं, उसका लोडिंग छोड़ दी मैंने, तो बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल position. And what was the original position? This point was original position, no permanent deformation. लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं, बॉडी को यहां से छोड़ूं, तो कहां पे बॉडी पहुंचेगी? तो बॉडी यहां पहुंचेगी, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल स्ट्रेन और परमानेंट डिफॉर्मेशन और परमानेंट स्ट्रेन. तो सर इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट में क्या डिफरेंस है? इलास्टिक लिमिट में इफ आई स्ट्रेच द बॉडी एंड अनलोड इट, छोड़ दूं, बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देयर विल नॉट बी एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक में क्या होगा? इफ आई अनलोड द बॉडी इट विल कम बैक, बट देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो आप रेजिडुअल स्ट्रेन की फॉर्म में देख सकते हैं. तो जाएगा तो ऐसा, लेकिन जब वापिस आएगा ग्राफ तो ऐसा आएगा. This is the O point and this is the residual strain point for us. Then comes the yield point. There is a upper yield point. Upper yield point. There is a lower yield point. तो upper yield से lower yield point में what is the significance? That must have been covered by mentors Siklani sir or Jagdish sir. But let me tell you, upper yield point से lower yield point is the first step where you see not rise in the stress but fall in the stress level. तो कैसे पता लगेगा भाई upper yield point आ गया? सर सडनली द स्ट्रेस लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग. एंड कैसे पता लगेगा सर लोअर यील्ड पॉइंट आ गया? द स्ट्रेस अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो यहां स्ट्रेस क्यों गिरी? बिकॉज सडनली
यहाँ पे रेजिस्टेंस खत्म हो गया। सडनली रेजिस्टेंस खत्म क्यों हुआ? दैट डिपेंड्स अपॉन सर मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो अगर वो आपको बोलता है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है, अब बोलेंगे सर अपर यील्ड पॉइंट इज द पॉइंट वेयर यू ऑब्जर्व सडन फॉल इन स्ट्रेस लेवल और सडन फॉल इन रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्ट करना बंद कर देती है। And what is lower yield point? Sir, that is the point where again you start experiencing the rise in resistance or stress level. अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि सर बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है, तो जब तुम उसको खींचोगे एक ऐसी स्टेज आएगी, वन स्टेज विल कम वेयर the molecular resistance will suddenly fall, and there will be, the reason for that is intermolecular distance or intermolecular resistance only. That is all answer you give, कि intermolecular resistance suddenly falls because of intermolecular bond strength, and hence that sudden fall we observe. And then what happens again? It goes up. This is called strain hardening. That material again starts start getting hardened. Why? Because again the molecules start getting entangled with each other. कि पहले तो उनका molecular strength immediately गिरी, फिर वो एक दूसरे के साथ दोबारे आके entangle करना start कर दिया, and then उनकी strength again गिरी, तो ultimate point तक तुम चले गए. So this rise in the stress level from here to here is normally obtained by metal working और metal forming kind of operations. जैसे हैमरिंग करते हैं तो उससे ये स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है, तो हैमरिंग या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने से स्ट्रेंथ बढ़ती भी है. तो दैट इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम यील्ड पॉइंट टू दिस. somebody ask you what is the significance of lower yield point? what is the significance of lower yield point? ये जो C point है इसका significance क्या है? let me tell you that now. इफ यू आस्क यू के यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की कहां पे मिलती है, यील्ड स्ट्रेंथ, तो आप बोलेंगे सर लोअर यील्ड पॉइंट पे मिलती है. इट इज ऑब्टेन्ड एट लोअर यील्ड पॉइंट. व्हाई? बिकॉज सर लोअर यील्ड पॉइंट, एंड आई टेल यू दिस लोअर यील्ड पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू योर इलास्टिक लिमिट पॉइंट ऑल्सो. इट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑल्सो. सो अगर मैं बोलता हूं ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है, तो इट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट. एंड at this point stress corresponding to lower yield point is called yield strength, और प्रूफ स्ट्रेंथ बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज सिमिलर टू दैट ओनली. यील्ड स्ट्रेंथ क्या देती है सर? ये डिजाइन स्ट्रेंथ होती है. दैट मींस जो डिजाइन इंजीनियर है वो इसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करेगा. डिजाइन स्ट्रेंथ, प्रूफ स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, दे आर सिमिलर टर्म्स. नाउ कहां पे मिलती है सर? लोअर यील्ड पॉइंट के ऊपर मिलती है. दिस इज हाउ वी आर गेटिंग. और कौन कौन सी स्ट्रेंथ वैल्यूज मिलती हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे? सर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है, एंड फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मिलती है, एंड यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है. सो ही इज गोइंग टू आस्क यू स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है. सर स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इनफाइनाइट कई भी वैल्यूज हो सकती हैं. एंड व्हाट इज स्ट्रेंथ? सर स्ट्रेंथ इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस at which the body will fail. How do you define the failure of the body? Sir, failure of the body means when it starts showing permanent deformation. Failure कहां पे हो रहा है? यहाँ पे where do you say is the failure occurring? यहाँ पे no, this is the fracture separation. यहाँ पे no, not this. यहाँ पे कहां पे sir? Where we start getting द परमानेंट डिफॉर्मेशन. जैसे ही इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, वी विल से इट फेल्ड. तो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ, एंड दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर मी. एंड एज आई टोल्ड यू, लोअर यील्ड पॉइंट एक्चुअली टेल्स यू जहां पे आप इलास्टिक से प्लास्टिक रीजन में जाते हैं, सो यू कैलकुलेट यील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. लेट मी गो नाउ नेक्स्ट पॉइंट. As I told you, various regions, you can very clearly see various regions in this particular diagram now. What are the various region? पहला region आ गया proportionality limit. As I told you, sigma is proportional to epsilon. Hooke's law यहाँ तक valid है. And this particular proportionality limit is used to calculate modulus of elasticity. Just next to proportionality limit comes the your elastic limit. And now this is the elastic zone. Elastic zone क्या होता है? If you unload the body, it will come back to this point. And then after that comes the plastic zone. Plastic zone means now if you unload body, then there will be residual strain or permanent deformation. After plastic zone comes this. This is the strain hardening or work hardening region. This region is called work hardening zone. यहां से लेके अल्टीमेट पॉइंट तक. Why it is called work hardening or strain hardening? As I told you, material properties can be improved, like its yield strength, its strength, etc. can be improved by metal deformation or doing strain on that. जितने भी तुम्हारे metal forming operation हैं, जैसे हैमरिंग कर दिया या तुमने स्ट्रेचिंग कर दिया,
उसमें मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एंड मटेरियल की स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ती है? स्ट्रेन हार्डनिंग इज द रीजन इन विच दैट अकर्स। तो यहां पे आपकी स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। दिस रीजन इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रीजन। आफ्टर दैट ऑब्वियसली देयर इज अ नेकिंग रीजन, और ये आपका फेलोर जोन है, उसमें नेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर डिफरेंट रीजन्स व्हाट यू कैन सी नाउ। So elastic zone, plastic zone, then comes the strain hardening zone, then comes the necking zone, ultimate tensile strength, fracture strength, yield strength, जो you get at this particular point, yield point. This is how different zones we have got. Let's now see this same thing from different diagram perspective. Okay, this is the strain energy. Actually, if somebody asks you what is the area under stress strain diagram, what is the unit of area under stress strain diagram? एरिया जब भी एक्स वाई डायग्राम का निकालना है तो एक्स इंटू वाई गिव्स यू एरिया। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया गिव्स यू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बट व्हाट इज स्ट्रेस? सर स्ट्रेस इज लोड पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। नाउ व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? सर एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम। and what is the force into displacement? That is the energy, that is the work or energy. So this area of stress strain diagram is nothing but energy per unit volume. The unit of that is joule per meter या millimeter cube. Suppose he asks you what is the unit of the area of the stress strain diagram. ये तुम्हें नजर आ रहा है, this pink color or this blue color, what is the unit of that? You will say, sir, the unit of that is joule per millimeter cube. What is the meter cube or millimeter cube? Sir, volume of the body. And what is the joule? Sir, which the work which I did to basically stretch or pull this particular body. So accordingly, this is the unit for that. Now this is the basically elastic region, plastic yielding, and strain hardening and necking. See these points again. Plastic yielding means you are not doing anything but it is getting stretched, strain produce हो रहा है. And what is the strain hardening? Stress बढ़ रही है. What is the necking? जिसमें automatically stress आपकी कम हो रही है. And the straight line you are getting in this. बाद में मैं आपको बताऊंगा this blue color जो तुम्हें नजर आ रहा है इसका नाम है resilience. So the entire strain energy stored up to elastic limit. So entire strain energy stored up to elastic limit is called modulus of resilience. So this particular thing is called modulus of resilience. Modulus of resilience. What is modulus of resilience? Sir, it is the area of stress strain diagram up to elastic limit. ये किस लिए? What does it show? It shows the elastic strain energy. Elastic strain energy. And what is this then? This is, sir, plastic strain energy. What is total elastic and plastic strain energy? Sir, that becomes modulus of toughness. That is becoming modulus of toughness. तो resilient क्या होता है कि अगर तुमने बॉडी पे वर्क किया तो स्ट्रेच हो जाएगा, छोड़ दिए तो वापिस आ जाएगा. There is no permanent deformation like springs. तो ये आपका रेजिलियंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्प्रिंग्स. एंड टफनेस क्या है? सर दिस प्लस दिस एरिया इज टफनेस. तो टेल मी, रेजिलियंस इज मोर और टफनेस इज मोर? Toughness is more. And where do you use toughness? Sir, we use toughness where if we apply force on some material, then it takes that energy, does not break, it takes that entire energy and maybe it gets deformed, not a problem. तो जहां पे हैमरिंग करते हैं ना, that small place जहां पे आप हैमरिंग करते हैं, if you go to some shop, यहां पे एक ऐसी बॉडी पड़ी होती है जिसके ऊपर हम फिर हैमरिंग करते हैं. दिस इज द मेटेलिक पीस जो रखा होता है और फिर हैमर हम उसके ऊपर जोर से मारते हैं. इसको नाम देते हैं एनविल. दिस इज कॉल्ड एनविल. तो एनविल एक ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जिसकी टफनेस इज मोर, बिकॉज इट शुड बी इन पोजिशन टू टेक द शॉक और इंपैक्ट लोडिंग. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की विच एक्चुअली शुड बी कैपेबल टू टेक इंपैक्ट लोड और शॉक? आंसर इज toughness. So toughness of the material should be there if it is to take the impact load. अच्छा, टफनेस अगर किसी मटेरियल का ज्यादा हो क्या होगा? सर इट कैन टेक मोर स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन इट विल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन. अच्छा, रेजिलियंस क्या है कि सर जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, बट इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और स्प्रिंग्स की क्या अच्छा होना चाहिए? रेजिलियंस और टफनेस. सर रेजिलियंस ऑफ द स्प्रिंग शुड बी गुड बिकॉज वी डू नॉट वांट परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग्स. So that is the meaning of it. So understood the various region now. Sir, elastic region, plastic yielding, strain hardening, necking. These are some of the region. This area is resilience. This total area is toughness. This slope is modulus of velocity. This side is stress or strength. And I'm still to define what is ductility, etc.
लेट मी सी अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये नोट करना है तुम्हें, कितना परसेंट स्ट्रेन है। वो बोलेगा कि आप स्ट्रेन को कैसे मेजर करते हैं। आप बोलेंगे सर दो तरीके से मेजर करते हैं, या तो एब्सोल्यूट टर्म में चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या परसेंटेज की फॉर्म में। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का जो है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कहां तक आप ऑब्जर्व करते हैं सर? 25 to 30%। ये अल्टीमेट पॉइंट 25% के आसपास होता है, या ये आपका सॉरी फ्रैक्चर पॉइंट 25% के आसपास या 30% के आसपास होता है। ये रफली थोड़ा दिमाग में रखेंगे। और आपको यहां पे जो यील्ड पॉइंट है वो कितने परसेंट के आसपास मिलता है, दैट इंफॉर्मेशन आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। नो, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, दिस इज द इलास्टिक लिमिट, दिस इज द प्लास्टिक बिहेवियर। आई थिंक दिस इज मोर और लेस द सेम इंफॉर्मेशन। लेट्स नो गो नेक्स्ट एंड सी दिस डायग्राम नाउ। ओके, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आया। What is the additional information? Now he is talking about the true stress strain diagram. So true stress strain diagram में क्या होता था? मैंने आपको बताया था true stress is जो आपने लोड लगाया over instantaneous area. Let us say this is the body जिसका original area was A naught. तो if I say F over A naught, then I get the engineering stress strain diagram. जो अभी तक हमने देखा that was engineering stress strain diagram. But suppose I take true area now, which is less than the area which actually is of the body. You see A is less than A naught. So if A is decreasing, then the true stress keeps on increasing. So वहां कहां से A कम होना स्टार्ट होता है? जब आपका basically body is undergoing the plastic deformation. So when body is plastically deforming, A start decreasing. When A start decreasing, then true stress start increasing. So true stress strain diagram and engineering stress strain diagram में the only difference is यहां से आपका दोनों bifurcate हो जाता है. So conventional stress strain diagram is this, true stress strain diagram is this. Why true stress strain में stress is looking like increasing? Answer is sir, because the instantaneous area decreases. Now he will ask you a question in the interview. He will say कि normally हम कौन सा डायग्राम प्लॉट करते हैं, ट्रू और इंजीनियरिंग? आंसर इज सर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन. बट हियर ट्रू इज गिविंग द ट्रू पिक्चर एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन इज नॉट गिविंग द ट्रू पिक्चर. तो तुम क्यों ड्रॉ करते हो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन? व्हाई नॉट ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन? आंसर इज सर नाम तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन है, बट एक्चुअली इट इज नॉट गिविंग यू ट्रू पिक्चर. इट इज नॉट गिविंग यू ट्रू पिक्चर, एंड लेट मी टेल यू व्हाई. Now the true stress strain diagram is telling you that the stress is increasing. What is stress? Resistance force per unit area. Now the stress can increase because of two things. Stress can increase because of two things. Either you increase F or you decrease A. Listen carefully. Stress can increase because of two things. Either you increase F or you decrease A. Actually within this region and within this region you observe one thing. Within this region, which is we called strain hardening region, resistance force is increasing. Resistance force is increasing. Hence we can say that body ka resistance is increasing. Body is resisting. Good. Body is resisting, and hence I say body ka stress is increasing, because stress eventually is the strength only. The maximum value of stress is called strength. So I can truly say कि yes, resistance is increasing, तो body का strength भी बढ़ रहा है. The moment I enter into this region, external loading actually is not increasing, resistance force is not increasing, but because of necking, because of the decrease in area, it is increasing. This F is not increasing, but A is decreasing. Now when A is decreasing, I cannot say body resist कर रही है. Body तो resist कर ही नहीं रही, body resist नहीं कर रही, body की strength नहीं बढ़ रही है. लेकिन in the true stress strain diagram it looks like the strength of the body is increasing. So that is a wrong picture. Actually body का strength is not increasing. Actually body is not increasing, it's a stress. Body resist करना increase नहीं कर रही, body तो resist कर ही नहीं रही है, वो तो necking हो रहा है, वो तो flow कर रही है. लेकिन theoretically because of decrease in area it is looking like that stress level is increasing. So sir, true stress strain diagram does not give me true picture, especially in the necking region. तो अगर आपसे वो पूछता है why don't you draw the true stress strain picture, you will say sir in the necking region where strength decreases, actually it shows that the strength is increasing, and hence true stress strain diagram gives you wrong perception about the strength of the material. That is the reason I do not draw true stress strain diagram. That is the meaning of it. Now again I think this already we have done. Ultimate strength, fracture, necking, strain hardening,
yield strength. What is the design strength? Sir, it is the yield strength. कहाँ पे आता है सर? Lower yield point पे. What is this point? Ultimate tensile strength. And what is the this region? Strain hardening. इसमें body का strength क्या होता है सर? बढ़ जाता है. That is the meaning of it. Now see what has happened. Okay, this is what the point I was telling you. There's a term called actual rupture strength and rupture strength. This is the meaning of it. So actual में true rupture strength is obtained through true stress strain diagram, but as I told you, that is not the true picture. This is the ultimate strength and this is the rupture strength, yield point, elastic point, proportionality, limits. All these points we have already discussed, not additional information. Let me see now any additional information we get. No, we do not get any additional information. This is the same diagram we are getting. Now let us see how do you calculate modulus of resilience or modulus of elasticity. This is how the stress strain ka slope is modulus of resilience. Again the same information we are getting. Now let me read couple of sentences here for our understanding. Beyond elastic limit, the mild steel will experience plastic deformation. This is what we have known. This starts at the yield point or rolling point, which is point B. So this point B is the rolling point. बोलता है elastic limit के बाद plastic rolling, plastic deformation will start. Upper yield point is this point. So how do you identify upper yield point? So this is the point beyond which the sudden fall in stress level will come or body will show the permanent deformation. As seen in the graph. There has to be stress strain diagram में कोई correlation नहीं है. तो beyond point B, stress is proportional to strain. That is not true. And stress may not be proportional to strain. And let me tell you one more thing, additional information here. Hooke's law says, अगर हमसे को पूछे what is Hooke's law, we'll say sir Hooke's law says stress is proportional to strain. And what is constant of proportionality called? Sir, that is called modulus of elasticity. So up to this point stress is proportional to strain. What beyond this? Stress still looks like proportional to strain. If the strain increases, stress also increases. But is this raised to power 1? Answer is no. This is raised to power n, some power n. It can be 1 point something, it can be 2. This is called power law. So if somebody asks you stress strain diagram mein beyond elastic limit, stress is proportional to what? You will say sir, proportional to some power of strain, which is called power law. This is called Hooke's law. This is called power law. Hooke's law is used to calculate the modulus of elasticity and power law is the relation between stress and strain. Understood? That is how we understand this particular point. So this lower yield point, upper yield point, this is what we have discussed. Strain is what? That already I have discussed with you. I'm giving you this information for your in the form of PDF also you'll get it. So you just go through all these points, we have discussed it. What is Hooke's law? How to calculate modulus, Young's modulus of velocity? That also is discussed. Now modulus of resilience को calculate करने का उसने आपको एक method बताया, half of basically sigma into epsilon, because you know modulus of resilience is nothing but this area. Modulus of resilience is nothing but this area. Don't you think this is looking like a triangle? Yes, it is a triangle. So how do you calculate it? Half of base into height. Height is yield strength, base is the basically strain corresponding to that particular yield strength. That is how we calculate this particular value, that is modulus of resilience. Okay, so I can calculate that also. Modulus of toughness is the total area, so it is sometime analyzed as a trapezium ka area, something like that. I can understand modulus of toughness. Okay, so this is a fracture point, plastic region, elastic limits. Hooke's law is valid up to this proportionality limit. Okay, so remember that in the modulus of resilience or elastic limit, normally your strain is less than 1%. That is what you have to understand. Now let me see if you got something. Always you will find a parallel line going here. It has a meaning. I will discuss with you the meaning of this little later. Now let me give you some typical materials. As I told you, this lecture is all about understanding stress strain diagram through diagrams only. So as you can see, you need to memorize some diagrams. You know, he will ask you draw stress strain diagram of any brittle material. It will brittle material will look like very high slope. What the slope gives? Somebody asks you what is the slope of stress strain diagram? So that gives me modulus of elasticity, and modulus of elasticity is similar to modulus of rigidity. There is a relation between these two. Modulus of rigidity is similar to modulus of elasticity. So brittle materials are those which have very high modulus of rigidity, or
this modulus of elasticity, their slope is very high. Number two, their plastic region is not there. They do not have plastic region. They only have elastic region. Their ultimate point, their yield point is almost same. There is hardly any difference. So there is a straight line of very high slope, that is brittle material. This side, the elongation measures ductility or malleability. How do you measure ductility or malleability? Sir, ductility or malleability of a material is measured through its plastic deformation expansion, strain in the plastic deformation region. So ductile material कैसा होता है? Sir, ductile material में ये region बहुत ज़्यादा होता है, plastic region. So there is a elastic region and then there is a plastic region. And what about the brittle? Sir, brittle does not have plastic region. तो किसका modulus of elasticity ज़्यादा है? Sir, brittle material का. और malleability, ductility किसकी ज़्यादा है? Ductile material का. और एरिया जिसका ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? टफ मटेरियल बोलते हैं. तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन होगा? सर, स्ट्रॉन्ग इज द मटेरियल जो वाई एक्सिस की तरफ को होगा. और डक्टाइल कौन होगा? जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा. मेलिएबल कौन सा होगा? एक्स एक्सिस की तरफ होगा. और जिसका एरिया ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? टफ बोलेंगे. तो अब यहां पे देखो, दिस मटेरियल इज ब्रिटल बिकॉज इट्स डक्टिलिटी इज वेरी लेस. लेस डक्टिलिटी मींस ब्रिटल मटेरियल. स्ट्रॉन्ग मटेरियल वो होता है जिसमें एक्चुअली स्ट्रेंथ ज्यादा है. सो दिस एक्सिस विल टेल यू स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल. यू विल से सर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या? स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये ब्रिटल बहुत ज्यादा है, मतलब टूट जाएगा, फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा. ये नहीं टूटेगा बिकॉज इसके नीचे का एरिया है. तो रेजिलियंस या एनर्जी स्टोर करने का पोटेंशियल इसके अंदर है. You know, whenever we apply force on a material from outside, that force actually must be stored in the material. जो मैंने बाहर से फोर्स डिफॉर्म करने के लिए लगाई, that should not break the material. And how do you know that material will not break or it will store the energy? Because of this area. So if area under stress strain diagram is more, that means that material can tolerate the shock or tolerate the external force, and maybe it will get deformed but it will not break. But if the brittle material is there, the area under this is very, very less. If the area is less, if you apply force, it will break. It cannot store that energy. That is the meaning of it. Plastic material, obviously it will have very less elasticity, so it is plastic material. So this is the difference between these materials. Now somebody asks you, draw me the graph of brittle material like glass and copper. तो ग्लास कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. कास्ट आयरन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. आपका डायमंड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. आपका I'll say कंक्रीट कैसा बनेगा या सिरामिक कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. ऑल आर ब्रिटल मटेरियल्स. डक्टाइल कैसा बनता है? इस तरीके से बनता है. कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, दे ऑल आर डक्टाइल मटेरियल्स. सो कॉपर इज एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल. It obeys the Hooke's law, but it returns to its obeys the Hooke's law in the beginning, but then there's a very large extension. So it also obeys the Hooke's law, but very small strain तक. उसके बाद वो उसकी strain बढ़ जाएगी. Glass is the example of brittle material. So this one is brittle material, this one is the ductile material. See now these two diagrams. टिपिकल स्टील, ये वैल्यूज याद रख लेना यार. ई का वैल्यू क्या होता है? दिस बेसिकली न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज मेगा पास्कल. सो 210 मेगा पास्कल के आसपास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का. तो स्टील का, कास्ट आयरन वगैरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यू शुड नो. एंड दिस इज 70 मेगा पास्कल फॉर ग्लास. तो दिस इज स्टील एंड ग्लास का डिफरेंस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का. दिस टू डायग्राम्स आर व्हाट आई थिंक सर, दिस टू डायग्राम्स आर one is for steel kind of material, and I don't know, he has given true stress strain diagram. True stress strain will look like blue and engineering stress strain will look like red color diagram. Now, so typical ductile material, structural steel. Now why this structural steel and cast iron I'm giving you? Because structural steel and cast iron are very important engineering materials. थ्रू ऑल दीज डायग्राम्स, यू नो, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएगा. यू मेमोराइज दीज मटेरियल्स एंड गो टू एग्जाम और गो टू इंटरव्यू, बिकॉज इज गोइंग टू आस्क यू माइल्ड स्टील का बना दो, स्ट्रक्चरल स्टील का बना दो, सिविल इंजीनियर्स डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कास्ट आयरन का बना दो. सो व्हेन ही सेज यू दिस, मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स. दे आर एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन ऑन universal testing machine, so you should memorize how these diagrams are to be made. Now see this. Okay, true stress strain diagram and engineering stress strain diagram. I think we have already discussed this. True stress strain diagram, engineering stress strain diagram, that also we have discussed. Any other information here? No. Proportionality limit, yield stress, ultimate, fracture point, true point. I think we have already discussed now this particular point also.
Now this is true stress strain diagram. B to C region is a flowing region, perfectly plastic region or yielding region. Then the necking starts. So I believe this is all true. 0.002 और 0.2% strain के ऊपर offset point. Offset क्यों draw करते हैं सर? yield point को find out करने के लिए draw करते हैं. Yield point किसका? ductile का और brittle का? सर ductile का. Brittle का तो I know. So remember this thing clearly. ये offset method is used to find out the yield point or yield strength. In which material? Sir, ductile material. Why ductile? Why not brittle? Because sir, brittle के अंदर I already know, because brittle का stress strain diagram is like this. So this point only is a fracture point and this point only is a yield point. But in ductile materials, I do not know this point clearly. Hence what I do, I draw 0.2% के ऊपर a tangent which is parallel to the tangent drawn at 0% strain, और जहां पे कट करेगा that point gives me yield strength. So offset method it is called. At what percentage offset or tangent is drawn? 0.2% strain. What does it find? Sir, yield strength it finds. That is the meaning of it. Now let me tell you, yes, very important point, secant modulus क्या चीज है? I have not so far defined what is secant modulus. Now let me define the meaning of secant modulus. Secant modulus is the slope of line drawn from origin of stress strain diagram. That means यहाँ से एक line draw करेंगे and intersecting the curve at the point of interest. Now what is the meaning of point of interest? The point where I want to find out. So secant modulus is the slope of a line drawn from the basically O point, stress strain diagram का intersection point. वहां से किसी point तक curve तक मैं एक line draw करूंगा, उसकी slope is secant modulus. Why do we do that? We draw it because okay, and secant modulus is normally some percentage of Young's modulus, 0.70, 0.85% of E, or Young's modulus का 1% is secant modulus. Let me tell you that. Why it is drawn? To find out the stiffness of the material in plastic या in elastic region. And this particular is the purpose of drawing this secant modulus. So why do we get the secant modulus? And let me give you this diagram. Now suppose this region, can you tell me what is this region? Elastic region or plastic region? Elastic region is up to this. So this region is what? Sir, this region is plastic region, right? Now tell me what is the modulus of elasticity at this point. How to draw that is, यहाँ चलो और यहाँ से एक line, straight line यहाँ तक खींच दो. इस straight line की जो भी slope होगी theta, so that tangent theta is giving me modulus which is called secant modulus. What this secant modulus is giving me? What this slope of this line giving me? Sir, this is going to give me the stiffness at this point. At this point, what is stiffness? Is it related to modulus of elasticity? Yes, sir. Modulus of elasticity is tangent of theta dash. If this angle is theta dash, iska tangent is modulus of elasticity. That means modulus, secant modulus is less than elasticity modulus, right? So that is the reason it is calculated as 0.7 E or something. So how to obtain secant modulus? Sir, the point at which you want to find out the, I'll say, stiffness of the material in plastic region. Elastic region mein you don't do this. In the plastic region, wherever you want to find out stiffness of the material, you draw a straight line from origin up to this and find the slope of that. And that slope is actually the secant modulus. And that slope is represented as some percentage of the total slope of the line drawn at point O on stress strain diagram, where the limit is elastic limit. So this is the purpose of secant modulus. So this is the secant modulus, this is the initial modulus, this is the secant modulus, and as you can see, secant modulus is less than the initial modulus which you getting. So it is for the plastic region. You have to memorize some of the materials. Glass is a brittle material, carbon steel is a tough material, aluminum is a ductile material, rubber is also ductile material. This is how you are to understand their values. And I'm giving you different diagrams. A is strong and stiff. Stiffness का पता कहाँ से चलता है? Slope से. Strong का पता कहाँ से चलता है? Stress diagram से. Stress direction. B is brittle. Yes, B is very, very brittle because ductility is less. C is very ductile. Yes, C is ductile also. It is looking like tough also. D is ductile but not tough.
So ductile but not tough, ductile and tough. This is a brittle, this is the basically strong material, and it is the brittle or stiff material also. Stiffness का पता कहां से चलता है सर? स्लोप से. इलास्टिसिटी का पता कहां से चलता है? स्लोप से. एक्स एक्सिस या स्ट्रेन एक्सिस से किस चीज का पता चलता है? डक्टिलिटी मेलेबिलिटी से. और अगर ये कम है तो ब्रिटल होगा. अगर एरिया ज्यादा है तो देन इट इज टफ. अगर वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है तो देन इट इज स्ट्रॉन्ग. दिस इज हाउ यू गेट इट. अगेन सम ऑफ द डायग्राम्स. ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं? ग्लास, कंक्रीट, सिरामिक्स. एंड डक्टाइल मटेरियल एल्यूमिनियम, रबड़, पॉलीमर वगैरह इस तरीके से बनता है उनका. रबड़ को शुरू में पुल करना इज इजी, बट आफ्टर दैट इट इज स्टिफ. प्लास्टिक इज अपोजिट टू दैट. प्लास्टिक को शुरू में पुल करना इज डिफिकल्ट, बाद में इट इज इजी. सो प्लास्टिक वेर एवर यू गेट, नो, plastic is difficult to pull in the beginning, then it is very easy. Rubber is easy in the beginning and then it is very difficult. So rubber, plastic, these are the things you need to understand. Okay, I think this already we have covered. Brittle and ductile, high yield strength, low yield strength, that we have covered. Very good diagram. Brittle and plastic. As I told you, plastic in the beginning behaves as elastic and then tough and strong. Then this is hard and tough. This is elastomer. Rubber sort of elastomer. So understand, this is how it is. So if I give you two diagrams, मैं बोलूंगा प्लास्टिक एंड रबड़ का डायग्राम ड्रॉ करो. This is plastic, this is plastic, this is rubber, right? And this one ductile, and this one brittle, and this one tough. So all ideas you should have on stress strain diagram, how we get different engineering materials. ये थोड़ा सा comparative analysis. As I keep on increasing the carbon, then it hardness and strength keeps on increasing. Medium carbon steel, low carbon steel. Mild steel कौन सा है? Low carbon steel. Then the cast iron and then the plastic. Cast iron and the steel comparison is very common. Jagdish sir is going to discuss with you the material properties here. Diamond is the hardest known material. You see the slope is so high, it is very hard material. And I tell you one thing, stress strain diagram say you get to know about many mechanical properties, like you get to know about the toughness, resilience, ductility, brittleness, so many things, except you do not get from it hardness. Hardness का पता हमें stress strain diagram से नहीं चलता. Keep that in mind. But it is related, it is related to brittleness. So diamond and then aluminum oxide and then silicon oxide. ये aluminum oxide, silicon oxide, these all are ceramic materials. These are used in ग्राइंडिंग मशीन एज ग्राइंडिंग व्हील. ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंड करता है उसके कटिंग टूल एजेस होते हैं वो इन मटेरियल्स के होते हैं. आई मीन डायमंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड. सिलिकॉन ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास. सो सबसे हार्ड कौन सा है? दिस इज. तो यू कैन सी द स्लोप एंड यू कैन फाइंड सी देयर बेसिकली स्टिफनेस ऑल्सो. Now this is metal are like this, ceramic are brittle, and polymers. So again, if I ask you the question related to this, high carbon spring steel, yes, mild steel is a tough material. High carbon spring steel has more resilience. As I told you, spring should have resilience. What is resilience, sir? Area under stress strain diagram up to elastic limit. So in this particular diagram you can see the elastic region is more. In this case plastic region is more. So mild steel is tough, but this is resilient, and spring steel should be resilient. That is the meaning of it. Okay, now you see, sometime he will ask you about the compression, that the way you draw the diagram in tension, compression is also same. Answer is it is similar to that, but only thing one you need to remember is, sir, when we draw the compression diagram, tension diagram is a universal testing machine, and compression diagram ke liye there is a different setup where you put compression load. One thing you should note is this slope of this line and slope of this line is same. And what slope gives? Modulus of velocity. So you will tell that, sir, in mild steel material at least, modulus of velocity for tensile loading and compressive loading is same. Modulus of velocity is same. Yes, yield strength is not same. Yield strength which is obtained elastic limit, it is not same. That is what you will know. That is what you will tell. So इस diagram से क्या पता लग रहा है कि slope is same in tension and compression. That is the meaning of this particular thing. But elastic region is not same for both. That is what we understand. This is a pull and this is the push. That is how we understand. Now this is cast iron, this is steel, this is the zinc or ductile material. So I think this is the comparative analysis. What kind of loading I am giving here?
I'm giving compressive loading. So this is the compressive loading going on. Plastic deformation. So compressive stress strain diagram also looks like elastic diagram, only there's a small difference. Let me tell you now here. If we ask you that draw the compressive stress strain diagram, not tensile stress strain diagram, what difference do you find? After elastic limit, when the plastic region comes, then the stress keeps on increasing, like true stress strain diagram of tensile diagram. But if it is a tensile diagram, then you get like this, you understand? But if it is the compressive diagram, you get like this. So this is compressive, this is tensile stress strain diagram. Why compression may the stress keeps on increasing? Because of this reason. Because once you compress it, then the load keeps on increasing, because the material is not elongating now. The material is getting compressed only, crushed only. So this is the stress strain diagram when the stress is compressive stress. Sometime he will ask you to draw compressive stress strain diagram. And for civil engineers, draw the stress strain diagram for concrete. So what is concrete? Is a basically brittle material only, and concrete may the strength which you calculate is the crushing strength, you know, because concrete is designed for compressive loading, so you calculate the crushing strength. This is the concrete diagram. I will discuss sometime for civil engineers differently this diagram. Now, what is the proof stress, sir? In the ductile materials, I do not know clearly where is the yield point. So what I do, I use offset method. 0.2% strain पे मैं एक straight line draw करूंगा parallel to the tangent drawn at this point. जहां वो meet करेगा, that point gives me the yield strength or proof stress, and that is the design stress for me. That is the meaning of it. Okay, now there are the four materials. Tell me which is the strongest. I think this we have already covered. This is the tough material, this is the brittle material, this is the ductile material, this is the strong material. So what are the mechanical properties? That is what we should know. हाई कार्बन स्टील स्ट्रांग होता है, किसके लिए यूज करते हैं सर? जैसे हम इसको वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करना है वहां पे यूज कर लेते हैं. जैसे मेरे को नाइफ बनाना है तो हाई कार्बन स्टील का बना सकता हूं. मीडियम कार्बन स्टील टफ होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. लो कार्बन स्टील डक्टाइल होता है, एंड माइल्ड स्टील इज एक्चुअली इन द कैटेगरी ऑफ लो कार्बन स्टील. बट जस्ट नाउ आई सेड माइल्ड स्टील इज अ टफ. यस, कंपैरेटिव टू other material it was tough in that diagram. Fine, this is how it is. What is the meaning of strong, tough and ductile? That you should know. Okay, this is the brittle material is a strong. Brittle material also strong material but not ductile. This is the ductile material, and tough also ductile material only. This is how we can differentiate. Anything new? Nothing is new, sir. This is the resilience, and this total is toughness. This we have already discussed. Toughness is the energy to break particular material, is the area under stress strain diagram. So smaller ceramics are not tough. Ceramics are not tough. Glass is a ceramic. उसके ऊपर फोर्स लगाओगे वो टूट जाएगा, टफ नहीं होता. एंड देन टफ मटेरियल आर, जिनके ऊपर फोर्स लगाओगे वो टफ होते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं. पॉलीमर्स आर ऑल्सो एरिया इज वेरी लेस. If I ask you which area is maximum, sir, green area is maximum. That is toughness. Which area is minimum, sir? Blue also, and this orange or whatever color is this. This is also less. Understand? So even polymers are not tough unless until they are reinforced, and this ceramics are also not tough materials. Again, I think we have covered this. This is low strength, high ductility, high strength, high ductility. This is high strength and low ductility, low toughness. This is high toughness. तो toughness, ductility, strength इनको एक बार ढंग से देख लो तो आपको strength का पता यहां से चलता है, ductility का यहां से चलता है, toughness का area से पता चलेगा. That is the meaning of it. Resilience क्या होता है? Resilience is this area, ability of the material to absorb within elastic limit. ऐसे इसको निकालते हैं, half of sigma into epsilon. Toughness is total area. So wherever we are using springs, we want it should be resilient material. So that is what we have already done. Okay, offset method we have already seen now. And yes, offset method is used to calculate what? It is used to calculate yield strength. This we have already covered. Proof stress already we have covered. Yes, now you see resilient material, brittle mode of fracture, डक्टाइल मोड ऑफ फ्रैक्चर. जब भी तुम दो चीज को तोड़ोगे, अगर वो ब्रिटल मटेरियल तो कैसे टूटेगा? वो उसके क्रॉस सेक्शन से डायरेक्ट टूट जाएगा. आई विल शो यू. एंड डक्टाइल कैसे टूटेगा? पहले नेकिंग होगा, उसके बाद टूटेगा. यू कैन सी दिस डायग्राम्स. नाउ दिस इज द ब्रिटल मोड ऑफ फ्रैक्चर, सडनली टूट गया. And this is ductile mode of fracture. So if I break a material on universal testing machine, can you tell me that is a brittle or ductile? Yes, by seeing the cross section I can tell that.
I believe now we have already covered all these slides which I discussed with you, and we come to an end of this session of stress strain diagram. Through this stress strain diagram, I believe you must have understood some concepts here, and stress strain diagram is a very important topic for interview, strength of material and engineering services paper 1 under the topic of material science. 3 different mentors have covered this topic. That shows the importance of this subject for you. Now I will make some kind of dedicated test for this so that your knowledge could be tested. Fine. Thank you.